Students, welcome back to our video coaching. Today's topic is very interesting and also very important. It is the fundamental of lot of questions, that is polar bond and polar compound. Already we have discussed in ionic bond, the bonds are polar, the compounds are polar, and covalent molecule re kon discussion kale, covalent bond can be polar, non-polar, covalent molecule can be polar and non-polar. And seତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି polar କ'ଣ non-polar କ'ଣ ଆମେ ଟିକେ ପରେ discussion କରିବା. So in this video beginning ରୁ ଆମେ discussion କରିବା detail what do you mean by polar bond or polar compound, ବା bond କେତେବେଳେ polar ହେବ କେତେବେଳେ non-polar ହେବ, compound କେତେବେଳେ polar ହେବ କେତେବେଳେ non-polar ହେବ. Look at bond and compound को ମୁଁ different ଭାବୁଛି. For example ammonia रे nitrogen 3 hydrogen सहित 3 covalent bond କରିଛି. So this bond is polar or not, and the molecule in whole is polar or not. एमिति आमे डिस्कशन करिबा स्टूडेंट्स. So polar bond, polar molecule, two things आमे डिस्कशन करिबा. Now I hope you can understand what is the difference between polar bond and polar molecule. Okay, so polar bond and polar molecule or polar compound, molecule compound एका जिनस एमानो को डिटेल बुझवा पूर्वरु we have to know a term that is electric dipole and electric dipole moment. Okay, this term को आमे बुझी सारिबा परे enter करिबा what is a polar bond or polar compound. So first come to understand what do we mean by electric dipole and electric dipole moment. What is electric dipole, students? If two equal and opposite charges are placed close to each other, let here plus q, here minus q, they become equal and opposite. If they placed very close to each other without touching, then that is called an electric dipole. Okay, जोठी भी आमे देखिबा जेमिति भी हो, if two equal and opposite charges are placed close to each other, then that is an electric dipole. And every electric dipole ro किछि ना किछि electric dipole movement थाए. Okay, every dipole रो किछि ना किछि dipole movement थाए. Dipole two types रे पढ़िबो स्टूडेंट्स, तुमे electric dipole पढ़िबो, magnetic dipole पढ़िबो. This chapter रे मु dipole कहूची माने it is electric dipole, and dipole movement कहूची माने it is electric dipole movement. So remember students, every dipole रो किछि ना किछि dipole movement थाए, and that dipole movement is a vector quantity. How much is the dipole moment? Formula लिखिछि मु p vector is equal to q into d vector. चलो ताको डिटेल डिस्कशन करिबा. What is q vector, what is d vector? If it is a vector quantity varies its direction, but first हमें मन रखिबा every electric dipole has some amount of electric dipole moment. Symbol होछि p. Dipole moment or symbol होछि p. Okay, so what is a dipole? Dipole is two equal and opposite charges plus q minus q separated by a small distance, and सेमान भीतर किछि कनेक्शन नाही. डिस्टेंस टाको मु देखैछि d. ताहेले the electric dipole moment is a vector quantity. This dipole ro dipole moment ho jote vector quantity given by p vector is equal to q into d vector. So p vector is equal to q into d vector formula रो तमे जानि परथुबो d vector डायरेक्शन जहा हबो p vector रे भी डायरेक्शन से हबो, and p vector magnitude केते हबो q into distance, because d vector magnitude होची एतिकी. ओके, d vector magnitude जदि एतिक हला p vector बा dipole moment vector magnitude केते हबो q into d, माने चार्ज into distance, and direction क्वाड हबो d vector direction जुआडे p vector direction भी सही पटे, and both रो direction को पटे ना स्टूडेंट्स मने रखो. Direction of p vector and d vector is very interesting students, because in physics direction को जेमिति निया जाइछि, in chemistry direction ता तार reverse अछि. This dipole movement and dipole physics syllabus रे भी पाइबो, chemistry syllabus रे भी पाइबो. Everything same अछि, direction ता reverse हे जाइछि. Physics रे direction ता निया हेछि from negative charge to positive charge,
and chemistry रे direction टा निया हेची from positive charge to negative charge. Okay, so every dipole is associated with a dipole moment whose magnitude is equal to charge into distance and whose direction is from negative to positive in physics and from positive to negative in chemistry. Remember, this is very important. तुम भाबुथुबो काहे कि एमिति chemistry निया गला, काहे कि एमिति physics रे निया गला. Now students, जोटी जोटी डाइपोल मूवमेंट को अप्लाई करा जाइछि सेठी डाइपोल मूवमेंट रो डायरेक्शन टा नेगेटिव रु पॉजिटिव नेले जो कंक्लूजन आसुछि पॉजिटिव रु नेगेटिव नेले भी सही कंक्लूजन आसुछि. When we will apply this dipole movement in some chemical concepts, then we can conclude that by physical concepts physics रा situations रे apply करिबा, then we can conclude that डायरेक्शन टा पॉजिटिव रु नेगेटिव नियो सही कंक्लूजन हमें पाइबा, डायरेक्शन टा नेगेटिव रु पॉजिटिव नियो सही कंक्लूजन सब पाइबा. व्हेन आई विल अप्लाई यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड. नाउ रिमेंबर, डायरेक्शन पॉजिटिव रु नेगेटिव नेले भी चलिबो, नेगेटिव रु पॉजिटिव नेले भी चलिबो. नॉर्मली ऑल केमिस्ट्री बुक रे डायरेक्शन ऑफ p वेक्टर एंड d वेक्टर इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड ऑल फिजिक्स बुक्स डायरेक्शन ऑफ p वेक्टर इज टेकन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. सो हमें सेमिति लिखिबा, फिजिक्स खातर फिजिक्स भलिया लिखिबा, केमिस्ट्री खातर केमिस्ट्री भलिया लिखिबा. फिजिक्स रो क्वेश्चन डारे फिजिक्स रो डायरेक्शन भलिया भाबिबा, केमिस्ट्री रो क्वेश्चन डारे केमिस्ट्री रो डायरेक्शन भलिया भाबिबा. सो ये गला डाइपोल कोण एंड डाइपोल मूवमेंट कोण जहा बुझेली लिखा हेची आराम रे लिखि परिबो. देन गोटे वेरी इंपोर्टेंट नोट आसिला पिला माने, डाइपोल मूवमेंट रो पोलर और नॉन पोलर भितरे कोण रिलेशन स्टूडेंट्स ना. If dipole moment of a bond is zero, then the bond is non-polar. Dipole moment zero means non-polar. Some dipole moment means it is called polar. Bond हो कि molecule हो. If dipole moment becomes zero, then the bond or molecule or compound is non-polar. If there is some value of dipole moment, then the bond or compound is polar. This is a very important conclusion. Remember it strongly. If dipole moment of a bond or compound is zero, then it is non-polar, and if there is some dipole moment, then it is polar. So look at the note. If dipole moment of a bond or compound is zero, then they are non-polar. If dipole moment of a bond or compound is non-zero, mean if it have some dipole moment, then they are polar. Very important. Now come to ionic compounds. Ionic compounds रे बा ionic bond रे always one side positive charge रहिला बेला other side negative charge रहिबो. जेमि Na plus Cl minus, calcium 2 plus chlorine minus. Okay, so what happens in ionic bond? Always one side positive charge thibo and other side negative charge thibo. So ionic bond are always polar. So ionic compounds are also always polar. So look at, ionic bonds have equal and opposite charge at their ends. Hence they have some dipole moment. Hence the bond or molecule is polar. So here I am discussion कले डाइपोल मूवमेंट कौन एंड डाइपोल मूवमेंट रो पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी सहित रिलेशन कौन. राइट डाउन द नोट. स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड why ionic compounds are always polar or why ionic bonds are always polar. Now we will discuss the polar nature of a covalent bond. Already I have told you a covalent bond or a covalent compound may be polar or may be non-polar. So that now we will discuss. So this is polar and non-polar covalent bond or compound. Covalent bond रे polar भी अच्छी, non-polar भी अच्छी, both discussion करिबा. We have taken example of Cl2 and HCl. Cl2 रे Cl भितरे covalent bond form ହେଇଛି. HCl रे H और Cl भितरे covalent bond form ହେଇଛି. This line is covalent bond and these are the two electrons present in the covalent bond. Those are called bonded electrons. We know one covalent bond भितरे two electrons रहिबो. These are the bonded electrons. These are the bonded electrons shown. अच्छा. So what happens? Look at, in
HCl, first HCl discussion करिबा then Cl discussion करिबा. In HCl, electronegativity of chlorine is more than that of H. माने पकाओ students, electronegativity from periodic table chapter. Electronegativity माने tendency to attract the bond pairs. And we know electronegativity of chlorine is more than that of hydrogen. So bond pair को chlorine will attract more as compared to hydrogen, because that attraction is measured by electronegativity, En value. That value of Cl is more, so bond pair को Cl टिके more attract करिवो and bond pair टिके Cl आड़ को move करि जिवो. But here both have same electronegativity, so bond pair को both same attract करिवे, so bond pair exactly center रे रहिबो. Look at the figure. Here bond pair exactly center रे अछि. Here bond pair towards Cl अछि, because electronegativity of Cl is more than that of hydrogen. So Cl or chlorine will attract the bond pair more. So bond pair is moved slightly towards chlorine. So bond pair chlorine आड़ को slightly move करिबा जोगु Cl ऊपर टिके negative charge create हबो, hydrogen ऊपर टिके positive charge create हबो. That negative charge is called partial negative charge, very small amount, so called partial negative charge minus delta develop हबो chlorine atom ऊपर, and hydrogen atom ऊपर partial positive charge plus delta develop हबो. Here no charge development, because bond pair टा exactly center रे रहिला, so both have same effect, so no charge development. Here bond pair टा टिके chlorine आड़ को displace हो जाइछि due to more electronegativity, so here some amount of negative charge will develop, small amount, that is called partial negative charge minus delta देखैछि. Here also partial positive charge plus delta देखैछि. So in HCl molecule, positive and negative charge are developed on H atom and Cl atom. This forms a dipole. Just टिके पूर्व जहाँ पढ़ेली से मन पकाओ. This forms a dipole and dipole moment. But here no charge develops, so no dipole moment. So here जदि dipole और dipole moment present, ताले this bond is polar. Here no dipole moment, माने this bond is non-polar. Now clearly बुझी पारलो, HCl bond is polar and Cl bond is non-polar. Both are covalent bond, but one hella non-polar and other hella polar. Look at here bond pair equally shared, here bond pair shared unequally. टिके क्लोरीन आड़ को मूव करछि. पूरा डिटेल लिखि देखो. इन HCl the electronegativity of chlorine is more than that of hydrogen, hence bond pair is more attracted by chlorine and shift towards chlorine slightly. Bond pair is more attracted by chlorine and shift towards chlorine slightly. This symbol द्वारा देखा जाए, this means chlorine रो electronegativity more and bond pair is shifting towards chlorine. Hence chlorine atom get partial negative charge minus delta and hydrogen atom get partial positive charge plus delta. Already बुझेछि. So a dipole is formed having some dipole moment. So HCl bond and molecule both are polar. HCl bond भी polar, molecule भी polar. Now chlorine कथा बुझेइथिली, chlorine कथा लिखा है. In chlorine the En of both Cl are equal. माने electronegativity of both chlorine are equal. So the bonded electron, that is bond pair of electron, are shared equally and both chlorine remains neutral. Just बुझेइथिली, both रो electronegativity same हेबा जोगु bond pair is shared equally and both chlorine becomes neutral. So no dipole and dipole moment. So Cl bond is non-polar and Cl2 molecule is non-polar. Clearly discussion hela. We know covalent bond भितरे polar bond भी अच्छी, non-polar bond भी अच्छी. And remember, if bond is in between two similar atoms,
क्लोरीन क्लोरीन हो ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो टू सिमिलर एटम भितर जदि कोभालेंट बॉन्ड हेची से निश्चित भावे नॉन पोलर हबो डिफरेंट एटम भितर जदि बॉन्ड पेयर हेची से निश्चित भावे पोलर हबो बिकॉज एटम दिना डिफरेंट हेले से मानकर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार भी मोर थिबो जहार भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर थिबो इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी स्लाइटली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट एटम सो सी गोटे पार्शियल नेगेटिव चार्ज पाइबो अदरटा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पाइबो सो डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट डेवलप हला so if a bond is formed between two similar atoms then that is non-polar. If a covalent bond is formed between two dissimilar atoms then that is polar. Look at to here in all heteroatomic molecules माने if bond रो two side रे दिना different atom रहिला heteroatomic like HCl H2O NH3 different atom जदि हला they are heteroatomic molecules. In all heteroatomic molecules the electron pair shift towards more electronegative atom already बुझाइछि as a result more electronegative atom get partial negative charge and other atom get partial positive charge and hence the bond become polar or slightly ionic. Polar माने slightly ionic बोली हमें कहबा प्योर कोभालेंट बॉन्ड कोटा ए गुडाक जो गुडाक नॉन पोलर 100% कोभालेंट बॉन्ड बट इफ पोलैरिटी डेवलप हला त माने दैट कोभालेंट बॉन्ड सत बट सम आयोनिक कैरेक्टर ता भीतर प्रेजेंट अछि पोलैरिटी जत्ते डेवलप हबो डाइपोल मूवमेंट जत्ते डेवलप हबो चार्ज डेवलप गुडाक जत्ते मोर एंड मोर हबो हमें कहबा आयोनिक कैरेक्टर सेति की मोर एंड मोर बिकॉज़ 100% आयोनिक माने पोलर 100% कोभालेंट माने नॉन पोलर इफ कोभालेंट बॉन्ड रे पोलैरिटी बा डाइपोल मूवमेंट देखा दला आमे कहू सम आयोनिक कैरेक्टर डेवलप इन दैट कोभालेंट बॉन्ड सो कोभालेंट बॉन्ड बिकम पोलर और स्लाइटली आयोनिक. Now आसीबा homoatomic molecules माने two atoms same homoatomic molecules रे electron pair are shared equally between two atoms because both have same electronegativity already बुझी सारलेनी so both atoms are neutral and no dipole moment hence the bond is non-polar. Very easy. So conclusion is covalent bond can be polar can be non-polar clearly सब बुझीली write down the note. Students, now we will discuss a new type of bond that is coordinate bond. Ionic bond or electrovalent bond discussed, covalent bond discussed. Now come to a new type of bond that is coordinate bond also known as dative bond. So coordinate bond is mostly used किछि बुक रे coordinate bond जगह रे dative bond लिखा है so this is also dative bond and this bond is interesting काहेकि ना two atoms भितर electron share हबो but both electrons are contributed by one atom only. कोभालेंट बॉन्ड रे कोन होतला ये गोटे दोतला सी गोटे दोतला शेयरिंग होतला बट किछि बॉन्ड रे देखा गला जे बोथ इलेक्ट्रॉन्स जणे दबो बट दुई जण जाक शेयर करिवे माने बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय वन इलेक्ट्रॉन जणे दबो बट यूज करिवे दुई जण जाक सो कोभालेंट और कोऑर्डिनेट भितर गोटे माइन्यूट डिफरेंस अछि सिमिलरिटी कोन ना कोभालेंट बॉन्ड रे भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होची कोऑर्डिनेट बॉन्ड रे भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होची इन कोभालेंट बॉन्ड each atom contribute one electron ये गोटे दबो से गोटे दबो जो two electrons form हला ताकू both enjoy करिवे बा both share करिवे but coordinate bond रे कोन देखा जाउची ना both the electrons are contributed by one atom but shared by both of them ये गोटे से गोटे दबनी दुईटा जाक जणे दबो आ दुई जण जाक ताकू कंट्रीब्यूट माने शेयर करिवे ओके सो एग्जांपल देले क्लियरली बुझी जिवो कौन लिखले दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोभालेंट बॉन्ड जेहेतु एठी भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होची सो दिस इज आल्सो ए कोभालेंट बॉन्ड सो दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोभालेंट बॉन्ड वेयर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कंट्रीब्यूटेड बाय वन स्पीशीज ओनली बट शेयर्ड बाय बोथ शेयर्ड पेयर माने जो इलेक्ट्रॉन पेयर टाकू बोथ शेयर करछन्ती दैट इज कॉल्ड शेयर्ड पेयर आल्सो दैट इज बॉन्ड पेयर बॉन्ड भीतर से इलेक्ट्रॉन अछि बॉन्ड पेयर भी कहि परिबा शेयर्ड पेयर भी कहि परिबा दैट शेयर्ड पेयर आर कंट्रीब्यूटेड बाय वन स्पीशीज ओनली बट शेयर्ड बाय बोथ
and the atom which contributes the electron are called donors, very simple, and while the other is called acceptor. जे इलेक्ट्रॉन टा डोनेट करछि से डोनर and जे इलेक्ट्रॉन डोनेट न करी के शेयर करछि that is acceptor, and this bond is represented by an arrow mark from donor to acceptor. Coordinate bond is represented by an arrow mark from donor to acceptor. Come to example, we can get clearly understanding. H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड से केमती फॉर्म होची H2O प्लस O एरो मार्क H2O2. ना लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखिले H2O केमती हबो ऑक्सीजन रा आउटर मोस्ट रे 6 इलेक्ट्रॉन थिला 1 इलेक्ट्रॉन H सहित कोवैलेंट बॉन्ड कला another electron H सहित कोवैलेंट बॉन्ड कला so another 2 पेयर रो इलेक्ट्रॉन किछि बॉन्ड न करी की प्रेजेंट अछि बुझिपारछ H2O रो स्ट्रक्चर आइडिया करो H2O रे O 2 हाइड्रोजन सहित कोवैलेंट बॉन्ड करछि सो O रो आउटर मोस्ट रे थिबा 6 इलेक्ट्रॉन भितरु 1 इलेक्ट्रॉन एठी यूज हे जाइछि अदर इलेक्ट्रॉन एठी यूज हे जाइछि नाउ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड. So students interestingly मन रख कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कला परे इफ एनी एटम उपरे सम इलेक्ट्रॉन्स नॉट यूज्ड हेग्री प्रेजेंट अछि दे आर कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके सो दिस ऑक्सीजन रे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अछि. नाउ ये अनदर ऑक्सीजन से तो कंबाइन करिवो दिस ऑक्सीजन रो 3 इलेक्ट्रॉन्स बा 6 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स and this oxygen रो 2 लोन पेयर एठी हमें लोन पेयर कहिबानी कारण ये बॉन्ड करिनी बॉन्ड फॉर्म कला परे जो इलेक्ट्रॉन गुडा को बॉन्ड फॉर्म न करी की रही जाइछन्ती दे आर लोन पेयर. बॉन्ड फॉर्म न करूना हमें लोन पेयर कहिबानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहबा और वैकेंट इलेक्ट्रॉन्स कहबा. ओके सो हियर 2 लोन पेयर एंड हियर 6 इलेक्ट्रॉन्स से माने बॉन्ड हेबे केमती बॉन्ड हेबे ना इफ ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे दबो ताले आर 8 इलेक्ट्रॉन्स हेकि ऑक्टेट फुलफिल हबो बट इफ ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली दे देला आर ऑक्टेट टा फिल अप हबनी. नाउ दिस केस रे ऑक्सीजन रे ऑक्टेट अछि ना 2 2 4 8 2 6 8 2 8 दिस 2 ऊपर भी ऑक्सीजन रो अधिकार अछि दिस 2 ऊपर भी ऑक्सीजन रो अधिकार अछि सो ऑक्सीजन रे 8 अछि. इफ से बोथ इलेक्ट्रॉन ताकू कंप्लीटली डोनेट कर दबो ताले ये ऑक्टेट कंप्लीट हे जिवो सत बट ये ऑक्टेट कंप्लीट हबनी तेणु से माने कोन करंती ये डोनेट करिवो 2 बट बोथ ऑक्युपाई करिवे सो आर जेमिति 8 रहबा कथा रहइबो आर भी 8 हबो. सो वाटर रो ऑक्सीजन एटम टा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करूची अदर ऑक्सीजन एटम टा ताको शेयर करूची बोथ शेयर करूचंती सो क्लियरली दिस इज डोनर एंड दिस इज एक्सेप्टर. मैं बुझेइतिली बोथ इलेक्ट्रॉन्स जणे कंट्रीब्यूट करिवो बोथ शेयर करिवे ताहेले कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हबो. सो दिस ऑक्सीजन बोथ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करथिला एंड ये कंट्रीब्यूट न करी कि शेयर करथिला सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हला एंड दिस इज डोनर एटम दिस इज एक्सेप्टर एटम सो एरो मार्क रे एठी दिया हला. नाउ क्लियरली बुझी परथुबो केमिति बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय वन एटम बट शेयर्ड बाय बोथ. Similarly, come to another example NH4 plus. NH4 plus केमिति फॉर्म होची NH3 रे H plus add हेले NH4 plus होची. So NH3 ड्रॉ कली फिगर N रो आउटर मोस्ट ऑर्बिट रे 5 इलेक्ट्रॉन सो 5 इलेक्ट्रॉन रो दिस कोवैलेंट बॉन्ड रे 1 यूज हला दिस कोवैलेंट बॉन्ड रे 1 यूज हला दिस कोवैलेंट बॉन्ड रे 1 यूज हला एंड दिस ऊपर 2 बा 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहला दिस इज द लोन पेयर. नाउ ये जते बेले H प्लस सहित कंबाइन करिवो कोन हबो ना दिस नाइट्रोजन विल डोनेट बोथ द इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन विल शेयर एंड नाइट्रोजन विल शेयर. सो नाइट्रोजन रो आउटर मोस्ट जेमिति 8 अछि सेमिति 8 रहइबो हाइड्रोजन रो आउटर मोस्ट 2 हे जिवो बिकॉज़ हाइड्रोजन को यूज कर परिबो सो हाइड्रोजन रो आउटर मोस्ट 2 हे गेले बोथ स्टेबल हे गेला देन गोटे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मूला फ्रॉम N to H सो N to H म कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखैछि. Similarly, another example होची ओजोन O3 ओजोन केमती फॉर्म हबो O2 plus O एरो मार्क O3
सो फर्स्ट O2 देखली O भितर डबल बॉन्ड O रो 6 इलेक्ट्रॉन्स भितर 2 यूज हो जाइछि हियर दिस O रो 6 इलेक्ट्रॉन्स भितर 2 यूज हो जाइछि हियर एंड एमाने आ गोटे O सहित कंबाइन करिवे जार 6 इलेक्ट्रॉन्स अछि सो दिस O कंट्रीब्यूट करिवो बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस ऑक्सीजन एटम भी ताको शेयर करिवो दिस ऑक्सीजन एटम भी ताको शेयर करिवो सो आर जेमिति 8 रहबा कथा रहिबो आर भी 8 हबो सो दिस ऑक्सीजन एटम और दिस ऑक्सीजन एटम भितर गोटे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हैला सो देखै छी दिस ऑक्सीजन एटम और दिस ऑक्सीजन भितर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हैला नो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थिला 2 लोन पेयर प्रेजेंट थिला 1 लोन पेयर डोनेट हैला परे दिस ऑक्सीजन एटम ऊपर अनदर लोन पेयर इज प्रेजेंट सो ताको देखैली I hope बुझी पारुथबो in all examples what happens both the electrons are contributed by one atom but shared by two atoms. This type is called coordinate bond or dative bond. Very important and interesting. Now this coordinate compound जो coordinate bond अच्छी that is coordinate compound. So coordinate compound रो character और properties टिके ionic और covalent रो intermediate माने आयोनिक और कोभालेंट रो मिडिल रे आर प्रॉपर्टी गुडा थिबो सो आमे देखितिले आयोनिक बॉन्ड रे हार्ड कोभालेंट कंपाउंड सॉफ्ट सो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स दे आर नेदर सॉफ्ट नॉर हार्ड माने हार्डनेस देखिबा जदी आयोनिक टू टिके लेस कोभालेंट टू टिके मोर सेमती मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन आयोनिक बट मोर देन कोभालेंट जस्ट लाइक हार्डनेस okay and such compounds are bad conductors of electric current solid ho ki solution ho coordinate compounds are bad conductors because there is no ions because this is a type of covalent bond it is a special type of covalent bond jehetu sharing hochi this is a special type of covalent bond and jehetu covalent bond ion form hoboni so solid state ho ki solution state ho they are bad conductors of electric current okay right on student now we will discuss Lewis dot structure of some compounds Lewis dot structure of these compounds माने आमे डॉट आउ क्रॉस रे हेल्प रे किए का को इलेक्ट्रॉन दोछि कोठी कोवैलेंट बॉन्ड होछि कोठी आयोनिक बॉन्ड होछि डिस्कशन करिया पे जिबा फर्स्ट कम टू CH4 माने हमें क्लियरली जानि परछे कार्बन रो outermost orbit रे 4 इलेक्ट्रॉन एंड 4 हाइड्रोजन सहित से मिसिला 1 कोवैलेंट बॉन्ड करिकी सो एवरी हाइड्रोजन 2 पाइले एंड कार्बन रो भी ए 4 ऊपर ऑक्युपेंसी रहिला ए 4 पेयर को से शेयर करि परिबो बिकॉज़ एवरी पेयर को से देछि सो कार्बन रो आउटर मोस्ट ऑर्बिट रे 8 हैला एवरी हाइड्रोजन रो 2 हैला एंड ऑल बिकम स्टेबल सो बॉन्ड टाको जदि मु देखैबी कार्बन दिस हाइड्रोजन सहित गोटे कोवैलेंट बॉन्ड 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 दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CH4 ओके सिमिलरली कम टू कार्बन डाइऑक्साइड सो टिके आइडिया कले जना पड़छ कार्बन रो आउटर मोस्ट ऑर्बिट रे 4 इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन से तो कंबाइन करछि 2 साइड रे देखैली दिस ऑक्सीजन रो 6 इलेक्ट्रॉन सो 2 दला कार्बन भी 2 दला ऑक्सीजन भी 2 दला दिस कार्बन भी 2 दला एंड दिस ऑक्सीजन भी 2 दला ऑक्सीजन रो एथि के ऊपर दिस ऑक्सीजन रो एथि को शेयर करबो बिकॉज़ ये 2 देछि एठी तनो एटा शेयर करबो दिस ऑक्सीजन रे 8 हैला दिस ऑक्सीजन भी एठी 2 देछि सो एटा शेयर करबो दिस ऑक्सीजन रे 8 हैला कार्बन एठी की 2 देछि एठी की 2 देछि सो कार्बन आकु भी शेयर करबो एंड आकु भी शेयर करबो सो कार्बन रो भी 8 हैला all complete their octet so bond form हैला एंड आकु मो देखै परबी C डबल बॉन्ड O एंड आ गोटे डबल बॉन्ड O ओके सो आपको केमते देखेबी C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O ए फिगर करिकरी एमती हम स्ट्रक्चर लिखुचे
सो स्टूडेंट्स तुम्हें भावुव ए सब कंपाउंड को मुझे आइडिया करके लिखिदे पारि ये जमी मु आइडिया कली ऑक्टेट रूल कंप्लीट किए क्या देले कौन हम ऑक्टेट रूल कंप्लीट हम सेमती आइडिया करी सम सिंपल कंपाउंड्स हम आइडिया करी लिखिपर बट लॉट ऑफ कंपाउंड्स अच्छी ऑल कंपाउंड्स को आम आइडिया करी परिबा नाही। सो स्टूडेंट्स यही स्ट्रक्चर गुड़ाक डिफरेंट कंपाउंड्स रो आम रिमेंबर करिबा घोषी घोषी प्रैक्टिस करी 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 मन रखिबा वेरी इंपोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर को आम केबे आइडिया करबानी स्टूडेंट्स मु किछिटा तुमको आइडिया करिकि बुझेई देबी जानिबा पई बट स्ट्रक्चर सब मन रखिबा निहाती निहाती दरकार आइडिया कले निश्चित भावे तमर भूल हबो तमे कोन मु जदि आइडिया करिकि लिखिबी भूल हबो मो सार भी जदि आइडिया करिकि लिखिबे भूल हबो तेणु कंपाउंड रो स्ट्रक्चर को आम रिमेंबर करिया को पड़िबो। नाउ कम टू NaOH NaOH कौन हिची ना Na प्लस आउ OH माइनस भितर आयोनिक बॉन्ड अच्छी OH माइनस टा केमी तैयारी हिची O रहुची 6 इलेक्ट्रॉन्स H माइनस रा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स H रहुची 1 इलेक्ट्रॉन H प्लस रहुची 0 इलेक्ट्रॉन बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गला एंड H माइनस रा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ना 1 इलेक्ट्रॉन गेन अच्छी H रो 1 इलेक्ट्रॉन थिला H माइनस माने 1 इलेक्ट्रॉन गेन हैला सो H माइनस रहला 2 इलेक्ट्रॉन। सो ए मानक भीतर गोटे डबल बॉन्ड फॉर्म हो गले दिस हाइड्रोजन रो भी 2 हो जिवो दिस ऑक्सीजन रो भी 8 हो जिवो। ओके सो कौन है O आउ H माइनस भीतर गोटे डबल बॉन्ड है एंड दिस OH माइनस टा Na प्लस सहित आयोनिक बॉन्ड कले। सो NaOH रे बोथ आयोनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट। O एंड H माइनस भीतर आयोनिक अच्छी सॉरी O एंड H माइनस भितर गोटे कोवैलेंट अच्छी डबल बॉन्ड टे Na प्लस और OH माइनस भितर आयोनिक अच्छी। सो स्टूडेंट्स जेहेतु आम बाय हार्ट करिक रिमेंबर करिबा सो कौन करूँ मु स्ट्रक्चर गुड़ाक टिके लिखि दउची ऑब्जर्व करो एंड रिमेंबर करो KCN माने K प्लस और Cn माइनस भितर आयोनिक बॉन्ड अच्छी एंड Cn माइनस भितर C ट्रिपल बॉन्ड N माइनस अच्छी एंड आ सहित K प्लस आयोनिक अच्छी दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड। ओके दिस इज आयोनिक बॉन्ड Cn माइनस और K प्लस भितर आयोनिक बॉन्ड तुम डॉट स्ट्रक्चर करके देखि पारिबो एमिति ही आसीबो बट सब एनालिसिस करले बहुत टाइम टेकन हबो सो मु लिखि लिखि जाउची तमे रिमेंबर करी करी जाओ। नाउ कम टू CaCO3 रे कोन अछि कैल्शियम 2 प्लस एंड कार्बोनेट 2 माइनस भितर आयोनिक बॉन्ड अच्छी CO3 2 माइनस भितर कोवैलेंट बॉन्ड अच्छी केमिति अच्छी C सिंगल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O दिस इज CO3 2 माइनस एंड दिस फॉर्म्स ए बॉन्ड बिटवीन कैल्शियम 2 प्लस। ओके सो एमिति स्ट्रक्चर गुड़ाक लिखिला बेले गोटे जिनस मन रखिबो हाइड्रोजन को 1 बॉन्ड ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड कार्बन को 4 बॉन्ड नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड एमि सब अच्छी हेले इफ O माइनस हो गला ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड दरकार पड़ुला O माइनस हो गला माने ता पाखरे गोटे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अच्छी सो से सिंगल बॉन्ड रे भी तार ऑक्टेट फुलफिल हो जिवो बुझिपार नहीं न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम जदि नेबी डबल बॉन्ड हेले ऑक्टेट फुलफिल होतला ना O माइनस कथा जदि नेबी O माइनस को माने ता पाखरे गोटे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अच्छी सो ताको डबल बॉन्ड दरकार नहीं सिंगल बॉन्ड दरकार O प्लस सहित जदि जने बॉन्ड करिवो ट्रिपल बॉन्ड दरकार न्यूट्रल O को ऑक्टेट फुलफिल करिया पे डबल बॉन्ड दरकार O माइनस को सिंगल बॉन्ड दरकार O प्लस को ट्रिपल बॉन्ड दरकार। ओके सिमिलरली नाइट्रोजन जदि नेबी न्यूट्रल नाइट्रोजन को ट्रिपल बॉन्ड दरकार बट N माइनस जदि हला नाइट्रोजन रो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हे गला सो ताको ट्रिपल बॉन्ड दरकार नहीं डबल बॉन्ड दरकार दिस कांसेप्ट आर वेरी हेल्पफुल। ओके नाउ कार्बन एंड ऑक्सीजन कार्बन मोनोक्साइड
कार्बन मोनोक्साइड रे C आउ O भितर गोटे डबल बॉन्ड एंड ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो सिंपल जाक टे बुझे दूची, डिफिकल्ट जाक बुझियानी मन रखियो। कार्बन रो आउटर मोस्ट रे 4 इलेक्ट्रॉन्स थिला, आउटर मोस्ट रे 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन रो आउटर मोस्ट रे 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो केमिति बॉन्ड होची स्टूडेंट्स देखो, फर्स्ट कार्बन रो 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन रो 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं कि डबल बॉन्ड हे गला। देन दिस कार्बन पाखरे 2 अच्छी एंड दिस ऑक्सीजन पाखरे 4 अच्छी। सो दिस ऑक्सीजन वाले नाउ कार्बन रो 6 हला, ऑक्सीजन रो सिना 8 हे गला, कार्बन रो 6 हला। सो ऑक्सीजन कौन करिवो, दिस 2 इलेक्ट्रॉन को भी शेयर करबा पे दबो। सो निजे भी ताको शेयर करिवो, कार्बन भी ताको शेयर करिवे। सो कार्बन रो 8 हला, ऑक्सीजन रो 8 हला। सो कार्बन ऑक्सीजन भितरे एगुडा को गोटे डबल बॉन्ड हला, एडा गोटे सिंगल बॉन्ड, एडा गोटे सिंगल बॉन्ड मिसी डबल बॉन्ड हला। बट एडा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हबो बिकॉज़ बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय ऑक्सीजन। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हबो। सो एमिति एवरी स्ट्रक्चर एनालिसिस करिया उचित नहीं, रिमेंबर करिया उचित। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द एग्जांपल ऑफ N2O3। N2O3 स्ट्रक्चर केमिति, N सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। N2O2 हैला, N2O3 रे दिस नाइट्रोजन रो कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। मन रख स्टूडेंट्स, समटाइम्स ऑक्टेट रूल कंप्लीट न ही कि भी कंपाउंड अच्छी। केमिस्ट्री गोटे एमिति पाठ, एबे गोटे रूल कहितिबा किछि दिन परे से रूल रो एगेंस्ट रे गोटे एग्जांपल देखा जिवो। सो केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। जहाँ किसी रूल कह जाऊँगी भावनी जे 100% सही रूल रे ही काम हो जीवो। एवरी रूल रो एक्सेप्शन अच्छी, एक्सेप्शन रो एक्सेप्शन अच्छी, तो लॉट ऑफ एक्सेप्शंस आर देयर। नो रूल इज 100% एप्लीकेबल जस्ट लाइक फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। सो एबे मो ऑक्टेट कंप्लीट कथा बुझौछि, बट तमे देखिबो एमिति भी कंपाउंड आसीछि जार ऑक्टेट कंप्लीट होउनी फिर भी सेटा कंपाउंड। सो आगो को एमिति कंपाउंड देखिबो जो थिरे ऑक्टेट कंप्लीट हेइ नथिबो बट कंपाउंड आमे देखि पारुथबा। रिमेंबर दिस पॉइंट, यू विल कम थ्रू ए लॉट ऑफ एग्जांपल्स। नाउ कम टू N2O। N2O रे N ट्रिपल बॉन्ड N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, you can see all has octet role। एमोनिया रे N3 कोवेलेंट बॉन्ड H, नाइट्रोजन आउटर मोस्ट ऑर्बिट रे 5 इलेक्ट्रॉन थिला, कोवेलेंट बॉन्ड रे 3 यूज हे गला एंड 2 एठी अनयूज रही अछि। दिस इज कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस लोन पेयर इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट। ओके, H2SO4। H2SO4 रे S सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। दिस इज H2SO4 स्ट्रक्चर। ये सब रिमेंबर करो। ओके, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहली, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत जगह रहउची। हियर आल्सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अछि। हियर आल्सो दिस नाइट्रोजन रो आउटर मोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन थिला, हियर 2 1 3 यूज हेछि। सो दिस नाइट्रोजन ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहिछि। कहा ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट के एब्सेंट तमे जानि देई परिबो। लुक एट हियर, देखो सल्फर रो आउटर मोस्ट ऑर्बिट रे हाउ मच इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 रो दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड रे 2 यूज हला, दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड रे 2 यूज हला, दिस कोवेलेंट बॉन्ड को सल्फर 1 देइछि एंड दिस कोवेलेंट बॉन्ड को भी सल्फर 1 देइछि। सो दिस सल्फर ऊपर देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट दिस ऑक्सीजन ऊपर अच्छी बिकॉज ऑक्सीजन आउटर मोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स भितर हियर को 1 इलेक्ट्रॉन देइछि, हियर को 1 इलेक्ट्रॉन देइछि। सो दिस ऑक्सीजन ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज न होई के अछि। सो हमें कहबा दिस ऑक्सीजन पोजेस 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सल्फर डज नॉट पोजेस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो राइट डाउन दिस मच। এই যে স্ট্রকচর আর বেশি কিছু এটি কহুনি, ধীরে ধীরে যেতেবেলে গোটে নূয়া নূয়া চ্যাপ্টরে নূয়া নূয়া কম্পাউন্ড আসিব, স্ট্রকচর গুড়াক মনে রখি যাব। ফর দ টাইম বিং রিমেম্বর দিস 10 স্ট্রকচর্স।